बिहार चुनाव के नतीजों की बात करें तो अब करीब करीब पिक्चर क्लियर हो चुकी है। 243 में से 222 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, जिनमें एनडीए 108 सीट जीत चुका है, जबकि 13 सीटों पर आगे है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो अब तक घोषित नतीजों में 102 सीटों पर जीत हासिल की है महागठबंधन ने, जबकि 8 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। यानी एनडीए को बढ़त है और यही वजह है कि बीजेपी अपनी जीत का ऐलान भी कर चुकी है। बीजेपी ने कहा यह जीत पीएम मोदी की जीत है। तो आपको बता दें, रात 1 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। जैसे 1 बज चुका है, किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। बिहार में 222 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं 243 में से, और 21 सीटों पर गिनती अभी भी जारी है। हालांकि कांटे की टक्कर रही, लेकिन अब फासला जो है काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब क्लैरिटी है कि एनडीए सरकार बनाएगा। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ये सीधे लिए चलते हैं। Constituencies in Bihar, and as per the current information available, results in 223 constituencies have been declared. So we are only having 20 constituencies left in that sense, and as per the information also available, that only 17 ACs are there where we are having the rounds of EVM count is still going on. At other 3 locations already the rounds have been completed, and the VVPAT of 5 ACs which are to be 5 booths which are to be taken up for counting, those exercises are going on. So we are only having 17 ACs where less than 66 rounds are now to be completed, and we are hopeful that these things will come to end very soon. So in today's exercise, as from time to time, as directed by Commission, we have been sharing with you updates related to counting, and also giving the context under which these counting processes have taken place. I hope our teams are able to finish the remaining task on the ground as soon as, and the efforts put in by our functionaries on the ground is very laudable, and this is very important. All the political parties and candidates who have also given the support and assistance in the whole exercise is commendable in that sense. And from Commission side, we thank all of them for their support. Also support media, which has also covered the whole process very carefully, and also disseminated the information amongst the public at large. Hopefully we will have the final tally in another hour or so, and which would be visible to all of you on our website, and also at the respective counting locations where our returning officers, in the presence of our counting observers, are going through the last leg of this counting process. Would like to add anything? I think only for the by-elections, also apart from 2 seats in Madhya Pradesh, all results have been declared. Okay, so thank you very much for from our side, and good night from us. Thank you very much. Thank you.
इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना, मीडिया का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से पब्लिक तक पूरी इंफॉर्मेशन मीडिया के जरिए पहुंची है। बिहार चुनाव के नतीजों के बारे में 223 सीटों पर नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। आप वो जो टैली है वो देख रहे हैं, बीजेपी को कितनी, जेडीयू को कितनी, आरजेडी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, एलजेपी को और एआईएमआईएम को कितनी सीटें मिली हैं। 20 सीटों के नतीजे आने अभी बाकी हैं। यहां गिनती अभी भी चल रही है और जो पूरी इलेक्शन कमीशन की टीम है पूरी तरीके से कार्यरत है। उनका भी शुक्रिया अदा किया कि बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से ये काम चल रहा है। एक बार फिर सुनाते हैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया। And first, let me thank all of you for joining at this time with us. As you know, that counting started at 8 a.m. on 10th of November in 243 constituencies in Bihar, and as per the current information available, results in 223 constituencies have been declared. So we are only having 20 constituencies left in that sense, and as per the information also available, that only 17 ACs are there where we are having the rounds of EVM count is still going on. At other 3 locations already the rounds have been completed, and the VVPAT of 5 ACs which are to be 5 booths which are to be taken up for counting, those exercises are going on. So we are only having 17 ACs where less than 66 rounds are now to be completed, and we are hopeful that these things will come to end very soon. So in today's exercise, as from time to time, as directed by Commission, we have been sharing with you updates related to counting, and also giving the context under which these counting processes have taken place. I hope our teams are able to finish the remaining task on the ground as soon as, and the efforts put in by our functionaries on the ground is very laudable, and this is very important. All the political parties and candidates who have also given the support and assistance in the whole exercise is commendable in that sense. And from Commission side, we thank all of them for their support. Also support media, which has also covered the whole process very carefully, and also disseminated the information amongst the public at large. Hopefully we will have the final tally in another hour or so, and which would be visible to all of you on our website, and also at the respective counting locations where our returning officers in the presence of our counting observers are going through the last leg of this counting process. Would like to add anything? I think only for the by-elections, also apart from 2 seats in Madhya Pradesh, all results have been declared. Okay, so thank you very much for from our side. तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। साफ ये कहा गया कि अब 18 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं और यहां पर अभी काउंटिंग चल रही है। 17 सीटों पर 66 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। लगभग 1 घंटे का वक्त और लगेगा जब पूरी तरह से नतीजे आएंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। मीडिया का शुक्रिया अदा किया जिस तरह से लोगों तक, बिहार की जनता तक, पूरे देश तक नतीजों के बारे में जानकारी पहुंचाई है।
और मेरे साथ स्टूडियो में लगातार मेरे सहयोगी पवन नारा मौजूद हैं और साथ ही साथ नीतीश चंद्र पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, अभी हमने इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, उसमें साफ ये कह दिया गया अब लगभग 1 घंटे का वक्त बचा है और उसके बाद वेबसाइट पर पूरे जो